Hello everyone, how are you all? Hello, sir. Hello, sir. I am fine, sir. What Hello, about sir. you? I am fine, sir. And what about you? I'm also fine, thank you. Beta, in this class, today we are going to study English subject. And nowadays we are studying the chapter number 5 or 6. Which chapter is going on? Sir, chapter 5. Chapter number 5. Okay. Can anybody tell me the name of the chapter? What is the name of the chapter? Yes, sir. Yes, बताइए. The Pied Piper of Hamelin. Piper of Hamelin. Pied Piper of Hamelin. Now tell me one more thing. How many students have read the story? How many students have read the story and understood? Even they can, for when I ask, they can narrate all the story. They can narrate complete story. How many can narrate the complete story? That who is the main character, what is the theme, what happened, all those things, how many can explain? Show me your hand. शिवांगी, मुस्कान प्रजापति, साक्षी गौरव, आस्था मौर्य, अनुष्का, बरखा. Okay. Yashwardhan Singh, Anchit Kumar, Adarsh Singh, Shivanya. That means that these many students are here who have, who remember the story of this chapter, na? Isn't it? Yes, sir. Okay. Beta, in our last class, okay, down your hands, everybody. Beta, in our last class, what we did study? We studied which section we did? Grammar Jackson. In last couple of session, we studied grammar junction, where we studied that how the letter ing are used for making a verb as an adjective. By adding ing in the verb can be used as an adjective. We learned this one. After the grammar junction, everybody have done their exercises or not? Let me confirm. How many have completed the exercise? Show me your hand. Everybody have done that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What about exercises in book C? Did you complete the exercises in book C as well? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Beta, after completing the grammar junction, the next section in this chapter is the writing junction. Down your hands, everybody, please. Writing junction. In the writing junction, there is some questions regarding the chapter. You all are telling that already you all have read the chapter. Already you all have understood the concept, the story. And even if I ask, you all can tell the complete story. You all can narrate the complete story, isn't it? ऐसा ही है ना कि आप सारी स्टोरी बता भी सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So beta, while writing a story, whatever the story you all have read in this chapter. Let me one more thing. Acha, before moving ahead in the writing junction, one thing I would like to ask. I'm writing a couple of words here. The first one is the situation, and the second is the character. Muskan Prajapati, lots of voices from your side. Please focus on your study and rotate your mobile in the horizontal view. The first word. Okay. Shivangi Tripathi, can you read the first word? This one. Yes, sir. Sir, the first word is situation. What do you understand by situation? What is the meaning of situation? Sir, situation means sthiti. Sthiti. Okay. Sthiti. Anybody else?
Anybody else who is having the another meaning of situation? Same स्थिति नहीं, स्थिति मत बताइएगा, स्थिति already someone have told. Is there any other students जो situation का दूसरा meaning बताना चाहे कि नहीं स्थिति नहीं कुछ और होता है? How many students are there? Okay, Yashvardhan Singh. What do you understand by situation? First, unmute yourself. मुसीबत. Situation means मुसीबत होता है. Yashvardhan is telling. May I tell? बेटा may I tell is not a good way to asking the question. You should raise your hand first. अगर may I tell आप पूछ रहे हैं तो आप पूछ नहीं रहे हैं, आप इंटरप्ट कर रहे हैं. You don't have to tell. I will come to you in the last first. जो बीच में इंटरप्शन करेगा, you should learn that how to ask the question. First of all, you all need to raise your hand. Then I will come to you directly. बेटा situation means यशवर्धन ने बताया मुसीबत जो कि पूरी तरह गलत है. That is completely wrong. मुसीबत नहीं होता. ओके अनुष्का यादव. सर सिचुएशन मीन्स स्टेट अवस्था. स्टेट या अवस्था. किसी ने बताया स्थिति, किसी ने बताया स्टेट यानी अवस्था. स्टेट इज अ सिनोनिम. ओके आस्था मौर्य, डू यू हैव एनी अदर मीनिंग? सर परिस्थिति. परिस्थिति. शिवान्या चौधरी. सर परिस्थिति. ओके एनीबडी आर हैविंग एनी अदर मीनिंग? स्थिति, परिस्थिति, अवस्था को छोड़ के इसके अलावा और कुछ बताना चाहेगा कोई? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिचुएशन? एनीबडी एल्स? बेटा ऑल द स्टूडेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट यशवर्धन. यशवर्धन वाज रॉन्ग. सिचुएशन में स्थिति होती है, हम कैसे हमारी कैसे स्थिति है, परिस्थिति है या कैसी हमारी अवस्था है, सिचुएशंस के बारे में डिस्कशन होता है. The next word, the second word is the character. What do you understand by character? How many are able to understand the meaning of character? Raise your hand. मुस्कान प्रजापति. चरित्र. चरित्र. Okay. Anybody else? अभिनय पांडे. What do you understand by character, बेटा? सर चरित्र. अच्छा सुन के बता रहे हो. चलो कोई बात नहीं, सब सुन रहे हैं. नो सर. Okay. नो सर. Mute yourself. Mute yourself. Anybody else are here who is having the different meaning of character? I do not want to listen again चरित्र. चरित्र के अलावा और भी कुछ कोई बता सकता है? यस सर. यस यस सर. सर. अनुष्का. सर सिम्पटन लक्षण. Okay. That is all. सर मैं टेल. बेटा शिवांगी त्रिपाठी मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं अब. मैंने क्या बोला? May I tell? You don't have to speak. ये इसका मतलब you are trying to interrupt. You are interrupting. I will not ask the question from you. Okay, आस्था मौर्य, you tell. सर पात्र. पात्र. संजना पासवान. सर अक्षर. अक्षर. करेक्टर मीन्स अक्षर भी होता है. बिल्कुल सही. ओके करेक्टर, पात्र, चरित्र. शिवान्या चौधरी. व्यक्तित्व. बेटा पार्डन प्लीज. सर व्यक्तित्व. व्यक्तित्व है. ओके दैट इज आल्सो करेक्ट. गुड. संचित कुमार. अंचित. पात्र. पात्र. शिवांगी त्रिपाठी. सर पात्र. ओके बेटा करेक्टर मीन्स चरित्र हुआ, पात्र हुआ. आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पात्र, द सेंस ऑफ पात्र. चरित्र का मतलब समझ में आता होगा आप सभी को. यस सर. You all have. यस सर. You all have read a story in the chapter. Now you all have to tell that ki who is the main character in the story. Whatever the story you have learned, whatever the story you have read in the chapter number 5, who is the main character of the story? How many can tell? Who is the main character of the story? What is the story? What is the name of the story? What is the name of the chapter, beta?
Sir, the Pied Piper of Hamelin. Pied Piper of Hamelin. Yes, who is the main character of the story? The Pied Piper of Hamelin. Who can tell? Shivangi, Anushka, Arastha, Sakshi and Gaurav. Okay, Sakshi Paswan, you tell us beta. Who is the main character of this story? Sir, Hamlin. Hamlin is the main character. Sakshi is telling Hamlin is the main character of this story. Okay, anybody else? Yeah, how many Yes, sir. Hamlin is the main character of this story? Aditya Singh, you tell us. The Pied Piper Hamelin. The Pied Piper Hamelin. अच्छा, Pied Piper Hamelin एक ही था या अलग अलग थे? Hamelin, Pied Piper अलग अलग थे, क्या है ये? सर एक ही है. एक ही है. अच्छा, who is telling? Down your hands, everybody. Now tell me that ki who is, how many are agree with the answer of Sakshi Paswan? Sakshi ने, आदित्य सिंह ने बोला the Pied Piper of Hamelin, या Hamelin is the main character. How many are telling that ki she is correct? Asta Maurya, you tell us beta. Sir, Pied Piper. Pied Piper. Okay. Anushka Yadav. Sir, the Pied Piper is the character of the story. Is the main character of the story. Acha, what is Hamelin beta? What is Hamelin? Sanjana Paswan, what is Hamelin? Sir, Pied Beta, you are telling something else. What I am asking, you are not listening. Actually, I think you don't know. Anchit Kumar. Sir, the Pied Piper. What is Hamelin? I am asking another thing. I am asking what is Hamelin? What is the Hamelin word? Anushka Yadav. Anushka Yadav. Okay. Shivangi Tripathi. Anushka is not connected. Shivangi Tripathi. Sir, a small town. Hamelin is the name of a town. Asta Maurya, what is the Hamelin beta? Hamlin is a name of town. Okay. That means Sakshi is telling that कि Hamelin is the main character of the story. जो Hamelin जो town है वो main character है. आदित्य सिंह ने जो बोला था, अनुष्का ने जो बोला, आस्था ने जो बोला, वो Pied Piper main character है. जो ये Pied Piper कौन है? Who is the Pied Piper? मुस्कान प्रजापति. The बांसुरी वाला. Who is the Pied Piper बेटा? बांसुरी वाला. बांसुरी वाला. That means कि many students are telling कि बांसुरी वाला जो है, that is the main character of the story. उसी पे पूरी तरह story based है. Sakshi is telling Hamelin. I think Hamelin is the name of the town. It's not a main character of story. Why? Sakshi, आपको क्यों लगता है कि Hamelin is the main character of the story? Why do you feel like this? साक्षी गौरव, what happens to कैरेक्टर के साथ? ऐसा क्या हुआ था? कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है Hamelin, आपके हिसाब से वो क्यों मेन कैरेक्टर है? ऐसा क्यों लगता है आपको? Why do you feel? But there is no voice from your side. I think also you don't know. Acha, how many can tell what happens to the character? I think Hamelin is not the main character. All the students are agree with this one. The main character of the story is Pied Piper. And what happens to the character? What happens to the character? How many can tell? सिमरन भारती अभी कुछ भी नहीं जवाब दिए हैं. शिवांगी कनौजिया जो भी प्रॉपर करेक्टर ही नहीं है. बरखा, yes, unmute yourself and tell us that what happens to the character. Tell me the story of this chapter. Barkha. Sir, the Pied Piper in Himalaya. बेटा, आई एम आस्किंग द स्टोरी. पूरी स्टोरी मुझे सुनाइए. क्या हुआ इस पूरी, आपने चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ा?
कौन है, क्या हुआ, कहाँ रहता था, फिर क्या हुआ, सारी चीजें मुझे बताना है. ओके, नरेट द स्टोरी. A long time ago, on the banks of a river in Germany, there was a small town called Himalin. It was a beautiful little town with pine-shaped roofs on the houses and stone-paved roads. However, the town You are reading the book. downfall बरखा, you are not narrating the story. You are reading the book. आप किताब पढ़ रही हो. किताब पढ़ोगी तो फिर 2 दिन लगेगा. सब लोग मुझे स्टोरी सुनाइए, उसका पूरे तरीके से स्टोरी में क्या है, क्या हुआ, फिर ये डिटेल मुझे केवल आप मुश्किल से 2 4 5 लाइन 10 में बता दीजिए. मुझे बुक मत पढ़ के सुनाइए. दैट मीन्स कि if you are not able to narrate the story in English language, then also you can speak in Hindi, but at least you should narrate the story in your own language, not as per the book. Anushka Yadav. Sir, in last, when the piper asked to give full asked for the full amount, the mayor refused to give full amount. This is the story. बस यही स्टोरी है कि पाइट पाइपर ने पैसा पूरा मांगा, फिर मेयर ने रिफ्यूज कर दिया, बस खत्म. इतना ही कहानी है इस चैप्टर में. अनुष्का. No, sir. I need the complete story. If you know, then raise your hand. Otherwise, please do not raise your hand. How many are able to narrate complete story from beginning to ending? शुरू से लेके अंत तक. किताब पढ़ के नहीं आएगा. जिन्होंने स्टोरी ध्यान से पढ़ा है, रिकॉर्डिंग देखा था, वही लोग बता पाएंगे. None of the students are going to. अभी मैं सोचूं कि मैं एक बार पढ़ करके फिर आपको स्टोरी बता दूं, तो it is not possible. So please raise your hand if you know the complete story. अगर पूरा स्टोरी आपको ध्यान है, then only raise your hand. Otherwise, do not raise your hand. समय बिल्कुल भी ना खराब करें. Please don't waste the time. शिवांगी त्रिपाठी के अलावा how many are there? That means कि none of the students have read the story. Abhinay Pandey, I will come to you. Okay, Shivangi Tripathi first. You narrate complete story from beginning to the end. Sir, in Germany, there was a problem. There are many rats in everywhere, in its houses, shops, school, and every nook and corner. So the people of Hamelin were very dumb. So they go to mayor office and discussed their problem, but they could not find a proper solution. Next morning, there was a piper playing his flute. So a small girl named his piper. The piper play his flute, and all of rats in Hamelin were following him. In minutes there were no rats in Hamelin. Next day, the piper go to mayor office and replied to give his full amount. The mayor said, "You will get only 5,000 coins. There are no many more." The piper looks very angry and go from there. He pulled out his pipe and start playing it. However, this time he was playing a different tune. Soon, all of the children of Hamelin start following the piper. He walked out of town and disappeared with children
into the mountains. The town folks began to cry. The Pied Piper has taken our children away. The mayor decided to make amends. He set out with his men to search for Piper. They made the Piper by the mountain munching a piece of bread. The mayor said, "I am sorry, Piper. I will give you the promised amount. Let go of children, please." The Pied Piper said nothing and walked away. He returned in few hours, this time with all the children. The mayor handed him a bag containing the remaining gold coins. The Pied Piper took the bag and left, and never to be seen again. Okay. That means कि well done, beta. Shivangi Tripathi, you are the one who really narrate the story as I wished. Actually, you have narrated the story. This is the complete story. Ki what is the situation? What happened? Then Shivangi Tripathi told all the situations about the story. Anybody else who want to try? Yes, sir. Mute yourself. Whoever is not telling, please mute your mic. Put your mic on mute. I do not want any voice from your side if you are not telling any answer. Everybody, please put your mic on mute. If you wish to say anything, then only you have to unmute yourself. Shivangi Kanodia, you have to wait. After Asta Moria, I will come to you. Asta Moria, yes. Narrate the story. There was your own language without seeing into the notebook. I'm looking to you that whether you are looking anywhere in the copy or book or not. You do not have to. Just you have to see on the phone. You have to look into the phone. Then you have to. Yes, sir. Yes. There was a town named Hamlin. There was a big problem of rat. The rat was everywhere on every nook. The Hamlin people decided to talk with Mayor. They were discussed about the problem, but they not find a proper solution. After some hours, a strange man come and talk to Mayor that if he ride the rat, so what reward he get? The Mayor said that he get you 10,000 coins, 10,000 gold coins. After some time, the rats was go away. The people of Hamlin were very happy, and a small girl said the strange man Pied Piper. The Pied Piper go to the mayor office and asked for his reward, but the mayor said that he gives him only 500 gold coins. The Pied Piper looks angry and took away. After some time, the Pied Piper started fluting his flute and go to the mountain side. After soon, the children of Hamlin go back to the Pied Piper. Okay, good, Astha. Very good, beta. Also, you have tried very good, beta. Any of the musical instrument. If anybody want to play, it is not the starting. आप कहते हैं ना fluting. Fluting is not a correct word. You should have to tell. He started to play flute again. Yes, sir. Any of the musical instrument using the whenever we are getting the sounds. Agar let's say if you talk in Hindi कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने को इंग्लिश में बोलेंगे प्ले करना. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना कहा जाता है. ओके. After Shivangi, yes, sir. Who is looking to tell, who want to narrate the story? Anybody else who want to narrate the story?
बेटा इट डजंट मैटर कि whether you all are going to speak like शिवांगी त्रिपाठी और आस्था मौर्य, you all can speak मतलब in your own language. Once you start the speaking, it may be correct or incorrect, yeah, it may be small, it doesn't matter until unless you start speaking. आप लंबा नहीं बोल पाएंगे. सबसे पहले आप शुरू में कोशिश करेंगे, भूल जाएंगे, रुक जाइएगा, बात खत्म. लेकिन एटलीस्ट यू ट्राइड, यू शुड ट्राई. Who want to try? Who want to try? अच्छा, how many can tell in Hindi? How many can narrate the story in Hindi? Okay, Avinay Pandey, unmute yourself and narrate the story in Hindi or English. It is on you. Avinay, first of all, unmute yourself. बहुत समय की बात है, एक दिन एक गांव में बहुत ढेर सारे चूहे थे। और स्कूल में, घरों में और ऑफिस में बहुत ढेर सारे चूहे थे। और एक वहीं से पपायरस गुजर रहा था, तो वहां पर सभी लोग से पपायरस ने पूछा सबसे कि क्या यहाँ पर कोई कैसा सिचुएशन है। तो सभी लोग ने बताया कि दैट हम स्कूल और ऑफिसर्स और होम में बहुत ढेर सारे राइट्स हैं। तो उसने अपनी बांसुरी निकाली और अपने बांसुरी से उसको चूहों को अपने Very good, Avinay. Now stop. Beta, you are narrating story very good. The way you are narrating story, it shows that you have listened, you have read the chapter and understood. आपने चैप्टर पढ़ा है, समझा है और आपको समझ में भी आया और आपको रिमेम्बर भी है, याद भी है. But you are not able to narrate the story in English because I think you have not read the chapter twice or thrice. 2 बार, 3 बार, 4 बार आपको पूरे चैप्टर को अपने मर्जी से पढ़ना चाहिए. And while reading the chapter, you should try to understand the meaning of the sentence. और उस सेंटेंस को बोलना भी सीखना चाहिए, कई बार प्रैक्टिस करना चाहिए बोल के. ये बोलते समय, पढ़ते समय कई बार ये ध्यान देना चाहिए कि लेट्स से कि अगर हम क्या इसको अपने सिचुएशन में बोल रहे हैं, क्या बोल पा रहे हैं, क्या पूरा सेंटेंस हम भूल तो नहीं जा रहे हैं. ड्यूरिंग रीडिंग द चैप्टर you all keep trying, keep focusing on these things कि हाँ, कि हम पढ़ पा रहे हैं, क्या हमें याद हो पा रहा है, क्या एक सेंटेंस में बोल पा रहा हूं, जैसे क्या एक लाइन में एक सांस में बोल पा रही हूं या बोल पा रहा हूं या नहीं. ये सब आपको कोशिश करना चाहिए. चलिए ठीक है, everybody should try. Now we are having only 7 minutes, so coming on the topic, beta, there is a main character in the chapter number 5, the story, whatever the story you all narrated, the Pied Piper. Pied Piper के ही इर्द गिर्द है, Pied Piper ने सारी चीजें किया. इसी तरीके से I think everybody have watched some of the movies. Okay, how many remember any of the movie? How many have watched the movie till date? कोई भी मूवी लोग तो देखते होंगे ना. Yes, sir. तो कोई भी मूवी याद होगा तो उसमें भी मेन कैरेक्टर होते होंगे या नहीं. अच्छा, how many know the story, any of the story, कोई भी story? How many remember any of the story? If anyone does not remember any story, the task for today is you all have to listen, you all have to look into a story. कहीं पे आप पढ़ें या कहीं से सुने, लेकिन आपको एक स्टोरी लिखना है. Today you all have to write a story. While writing a story, keep these questions in mind. While writing a story, keep these questions in mind. Who is the main character in the given situation? जो आप स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, जो स्टोरी आप लिखने जा रहे हैं, who is the main character? What is the central problem? जो आप स्टोरी लिखने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं,
आपकी अपनी जो स्टोरी होगी उसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन सिचुएशन क्या है, कोई प्रॉब्लम है या कोई सिचुएशन है, व्हाट इज द मेन सिचुएशन. ओके. The third thing you have to keep remember, how is the problem solved. जो situation है उसको कैसे handle किया गया. Let's say कि if there was any problem, then how it was solved. मुझे पता है यशवर्धन आपको तो करना है नहीं, ये वाला स्टोरी तो कर नहीं पाओगे, इसीलिए तुम ध्यान भी नहीं दे रहे हो. बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, उसको कथा की तरह सुन रहे हैं, खत्म कर देंगे. मुझे पता है only 2 or 3 students are going to write a story. बाकी बच्चे ना कर पा रहे हैं ना कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं करेंगे तो कर भी नहीं पाएंगे. आज क्या वो 4 साल बाद भी नहीं कर पाएंगे. जो गलत सही नहीं करेगा, जो सोचेगा कि नहीं मुझसे सही सही करूंगी, मैं गलत करूंगी ही नहीं, वो किसी और का देख के छाप लेगा, अपनी मर्जी से वो नहीं लिखेगा. तो अपने मर्जी से नहीं लिखेगा तो ना गलती होगी ना सही होगा. और ऐसे लोग सुनते भी नहीं है ध्यान से जब मैं पढ़ा रहा हूं. जैसे कि संजना पासवान बतिया रही हैं कहीं से, यशवर्धन सिंह इज आल्सो टॉकिंग समवन एल्स, कहीं इधर उधर देख रहे थे. अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे आपको स्टोरी लिखना है, उसको भी नहीं ध्यान से सुना जा रहा है. लिखना तो है नहीं. देखता हूँ कितने लोग लिखते हैं. सभी की स्टोरी अलग अलग होगी ऐसा नहीं है, सभी के मन में एक ही स्टोरी आ जाए, इससे पता चल जाएगा कि कौन किसने किसका छापा है. I will know that ki how many have copied the story from someone else, because it is not the question answer that कि आपके बुक का क्वेश्चन है उसका आंसर सेम होगा सभी का, ऐसा नहीं हो सकता. सभी के मन में अलग अलग स्टोरी आ सकती है. देखता हूँ who is going to write the story. बेटा स्टोरी लिखते समय आपको मेन कैरेक्टर ध्यान में रखना है कि who is the main character in the given situation. The second point you need to keep remember that कि what is the central problem. आखिर मेन सिचुएशन क्या है आपकी स्टोरी का, और वो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया गया, यानी जो प्रॉब्लम अगर कोई है तो उसको कैसे सॉल्व किया गया. हाउ डज द मेन कैरेक्टर फील, उसके बाद मेन कैरेक्टर का उसमें क्या रोल था, क्या कैसे सॉल्व किया, और फिर उसने कैसा फील किया, अच्छा हुआ बुरा लगा, उसको क्या किया. व्हाट हैपेंस इन द एंड इन द मेन कैरेक्टर. सबसे लास्ट में जब स्टोरी एंड होता है तो क्या होता है उस मेन कैरेक्टर के साथ, तो स्टोरी का एंड कैसे होता है. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then you all have to write a story on this. I will look that how many are going to send the story. Another thing, another question. Imagine you were among children the Pied Piper. आप ऐसा इमेजिन करिए कि आप उन बच्चों के साथ थे जो पाइड पाइपर के साथ जो बच्चे थे उन बच्चों में आप भी होते. अबे इनटू द माउंटेन्स. जब पाइड पाइपर बच्चों को अपने साथ माउंटेन्स में लेके चला गया तो उन्हीं बच्चों में अगर कहीं आप होते तो व्हाट राइट ए स्टोरी अबाउट व्हाट यू थिंक कुड हैव हैपेंड देयर. वहां पे क्या हुआ होता. लेट्स से उन बच्चों के जगह पे अगर आप होते और पाइड पाइपर आप अपने साथ लेकर के आपको माउंटेन लेके चला जाता, आपको गायब कर देता आपके घरों से, तो क्या क्या हो सकता था, क्या मतलब कौन सी स्टोरी हो सकती थी, आप वहां से कैसे निकल के आ सकते थे या नहीं निकल के आते, क्या होता, वो भी एक स्टोरी आप लिख सकते हैं. एंड फॉर राइटिंग दो स्टोरी ऑल्सो यू कैन कीप इन माइंड दीज पॉइंट्स. द प्लेस वेयर द पाइपर टुक यू, वो ऐसा ही जगह जहां पे पाइपर आपको रखा होता. द थिंग्स दैट यू डिड देयर, ऐसी चीजें जो आप वहां पे कर रहे होते जब आपको गायब करके लेके जाता पाइपर तब. द थिंग्स दैट यू सॉ अराउंड, जो आप अपने आसपास किन किन चीजों को देखे होते. द वे यू फेल्ट देयर, आप कैसा फील कर रहे होते वहां पे. तो ऑल दीज 4 points you all have to narrate, you all have to tell during write the story when you are with the piper, when the children get away into the mountains. Okay बेटा, 2 story है. Yes, sir. को लिखना है. Your session is about to be closed. I will check that कि how many are going to send the story. बेटा आप लोग को 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जैसा भी समझ में आता है, इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही लिख देना, बट लिख देना. At least try to think. Okay? Yes, sir. But try Yes, sir. to write. Yes, sir.
but try to write the story in English language because this is English subject, not Hindi. हिंदी में मैम तो करवाती ही है. Okay? Yes, sir. Yes, Yes. sir.